Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has presented the Uniform Civil Code Bill on the floor of the Vidhan Sabha in Uttarakhand. Let's listen into former CM and Congress leader Harish Rawat's reaction on the bill. करना है, केवल ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसका पालन करना है और ड्राफ्ट किसी को उपलब्ध नहीं है, न मीडिया में है और जो ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है आप तत्काल उस पर चर्चा करना चाहते हैं। 700-800-900 पृष्ठों का ड्राफ्ट बताया जा रहा है, तो इसलिए मैं अपनी स्टेट लीडरशिप को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो तुमने कार्य मंत्रणा समिति को जो है बिल्कुल इरेलीवेंट कर दिया है, नियमों को इरेलीवेंट कर दिया है, तो हम उसे त्यागपत्र दे रहे हैं। मेरी शिकायत, क्योंकि धामी जी की उत्सुकता समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने बहुत चतुराई से अपना भाजपा के अंदर स्थान बनाने के लिए इस यूसीसी का उपयोग किया है। मगर केंद्र से मेरी शिकायत ये है कि उन्होंने उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य को, सीमांत राज्य को, जो संवेदनशील राज्य है कई दृष्टिकोणों से, आपने उसको टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल किया। आपने प्रतीकात्मकता के लिए हमारे राज्य को इस्तेमाल किया। आपको लाना था यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर के आती, जो सारे देश के ऊपर लागू होता। हमारे यहाँ जो कानून बनेगा भी तो वो हमारी सीमाओं के लिए होगा। देखिए, देश हित में, राष्ट्र हित में, और ये जरूरी था, क्योंकि एक देश एक राष्ट्र और उसकी चिंता करना सभी का दायित्व तो बनता है। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं इस चीज को, वो लोग जो कि खाते यहाँ, पीते यहाँ, रहते यहाँ, सोते यहाँ और पूरी तरह फायदा उठाते हैं, लेकिन गुणगान गाते हैं आज भी अन्य देश का, पाकिस्तान। ये वो लोग हैं जो कि यदि मैं देखूं तो जो समिति ने ड्राफ्ट तैयार किया है और जो उन लोगों ने सारे समुदायों को पूछ करके बातचीत की है, यानी दूसरे समुदाय के लोगों ने भी, मुस्लिम भाइयों ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि हाँ ये होना चाहिए, ये ड्राफ्ट के अंदर है ना, ये सभी को पूछ करके बना है ऐसा। देखिए, हमने कहा ना, अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो हमें मुसलमानों को कुरान पाक ने जो हिदायत दी हैं उसके खिलाफ बनता है, जैसे कि हम 1450 साल से पैतृक संपत्ति में बेटी का हिस्सा हम दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं वो अलग बात है, उसके खिलाफ कोई कानून बनता है तो हम उसको मानने को तैयार नहीं हैं। I can't understand what is their purpose, because if they are going to implement UCC, then why the Uttarakhand government exempted the Adivasis, Dalits from this act? If they are not, Adivasis and Dalits are not included under the preview of this law, then how it is going to be universalized and how it is a common law for everyone if Dalits are exempted from that? Actually, their purpose is not to bring a law to include everyone in the state or in India. Only their purpose is to dominate the minority communities like Muslims, Sikhs, Christians and Jains, Buddhists. Only to dominate them and only by implementing a law. And let's quickly now pull out for you some interesting provisions of the bill which has been tabled in the Vidhan Sabha today. If we can go full frame to the bill contents and the copy, of course, which you can see on your screens that we've managed to access. So let's quickly now show you the manner of succession, which is interestingly mentioned, of course, on page 53 in this bill. So clause 50 in this bill, of course, says that the manner of succession shall be this: the heirs specified in each of the clauses 1, 2 and 3 of section 49 shall succeed to the estate of the intestate and shall take such shares as specified hereinafter. And of course, then there is a distribution mechanism which is listed of estate amongst class 1 heirs and then of course amongst class 2 heirs. As you can see, there are rules for this, and then a distribution of estate amongst other relatives as well. So this is a very important provision of the bill, which of course speaks about the distribution, the manner of succession that of course shall take place
amongst children. And remember, of course, another crucial aspect of this bill is also mentioned on page number 178, where live-in relationship is also touched upon. Let's quickly show you that, you can of course see this. But before we get into that aspect, let me quickly bring in Praveen Kumar for more details on this story. Praveen, we are clearly, of course, examining this bill that has been tabled in the Uttarakhand Vidhan Sabha today. Some very interesting aspects have come out, including the succession, including the distribution of estate, which is mentioned quite clearly in the bill as well. निश्चित तौर पर आज टेबल कर दिया गया है। और अगर बिल को हम देखें, यूसीसी बिल को, चूंकि अब सार्वजनिक पब्लिक डोमेन में ये बिल आ गया है, तो इसमें कई प्रावधान हैं। जैसे सभी धर्मों के लड़कियों के लिए शादी की उम्र 1 कर दी गई है, 18 साल होगी। पुरुष और महिला को तलाक देने का समान अधिकार होगा। लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता दी गई है और उसको लेकिन अपनी पहचान को उजागर करना होगा। और लिव एंड रिलेशन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 6 महीने की सजा हो सकती है। लिव एंड इनके जो बच्चे पैदा होंगे उसको आम बच्चे की तरह संपत्ति का अधिकार होगा। महिला को के दोबारा विवाह की कोई शर्त नहीं है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इससे अनुसूचित जनजाति को उत्तराखंड में बाहर रखा गया। तो विपक्ष का ये भी सवाल उठ रहा है कि जब इसको बाहर कर दिया गया तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे इसको कहा जा रहा है। वहीं पे शादी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो आपको जो सुविधाएं हैं गवर्नमेंट देती है वो नहीं दी जाएगी। उत्तराधिकारी में लड़कियों का भी लड़कों की तरह ही बराबर की हिस्सेदारी होगी। ये सारी इसमें बात की गई है। यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो उस वक्त जो है हर धर्म की शादी तलाक के लिए एक ही कानून होंगे। जो कानून हिंदुओं के लिए है वही दूसरों पर भी लागू होगा। बिना तलाक दिए वे 1 से ज्यादा शादी नहीं की जा सकती, यानी 1 से ज्यादा शादी पर रोक लग गई है। जो चीजें नहीं बदलेगी, आमतौर पर अगर हम देखें तो जो लबोलुआब है इस यूसीसी में कि धार्मिक मान्यताओं पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रीति रिवाज हैं, चाहे वो शादी करवाने के पूजा पद्धति है, उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी। जिस तरह से पहले चली आ रही थी वो इसी तरह से की जाएगी। जैसे शादी पंडित या मौलवी कराएंगे ही, साथ ही आप कोर्ट में भी जाके शादी कर सकते हैं। खान पान, पूजा, इबादत, वो वेशभूषा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिला के देखें तो शुरुआती दौर में ये सारी चीजें निकल के आई है। लेकिन 2-3 बातें हैं, जैसे कि जनजाति को बाहर करना, उस पर सवाल उठेंगे। लिव एंड रिलेशनशिप को मान्यता देने पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल, अब लिव इन रिलेशनशिप पे जरा चर्चा कर लेते हैं। Let's quickly put out the aspect of live-in relationship now on our screen. So it clearly says submission of statement by partners to a live-in relationship. It shall be obligatory for partners to a live-in relationship within the state, whether they are residents of Uttarakhand or not, to submit a statement of live-in relationship under subsection 1 of section 381 to the registrar within whose jurisdiction they are so living. Any residents of Uttarakhand staying in a live-in relationship outside the territory of the state may submit a statement of live-in relationship under subsection 1 of section 381 to the registrar within whose jurisdiction such residents ordinarily reside. Children of a live-in relationship, there too, there is an aspect mentioned where it says any child of a live-in relationship shall be a legitimate child of the couple. So that again is a big statement. When live-in relationships are not to be registered, a live-in relationship shall not be registered where the partners are within the degrees of prohibited relationship as defined under clause of D of subsection 1 of section 3, provided that the prohibitions will not apply to persons whose customs and usage permit the relationship if it were a marriage, provided further that such customs and usage are not against the public policy and morality, or where at least one of the persons is married or already in a live-in relationship, or where at least one of the persons is a minor, or where the consent of one of the partners was obtained by force, coercion, undue influence, misrepresentation or fraud as to any material fact or circumstance concerning the other partner, including his or her identity. Then, of course, there is also procedure which has been written for registration of a live-in relationship as well. For record, let me bring in Himanshu Bhatt, political analyst, for more on this story. Himanshu, clearly, of course, a lot of tenets very, very interesting in this bill today that has been tabled in Uttarakhand, Himanshu, from the aspects of succession to the aspects of live-in relationship as well, registration and legality of it. Yes, this is a pilot case. This is what I think. This is a pilot test case. And as far as the succession is concerned, it's really, really welcome. In the sense, even today, in our majority community also, still even today, people have a tendency of saying, why don't I have a son and not a daughter?
See, this is a ground reality which you have to accept. Son and daughter are both equals, and they should be having a share in the paternal property equally on both the sides. So the daughter must get her due in her father's property. Similarly, a son will get his due in his father's property. See, till now, what was happening in majority of the, caste or subcaste or whatever you want to call it in our society. Absolutely. All right, Himanshu, I'm going to have to leave it at that. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.